वेलकम फ्रॉम अनदर डे इन अलमाटी। आज हम एक और ब्यूटीफुल लेक की तरफ जा रहे हैं विच इज़ कॉल्ड इज द लेक इसिक and apparently there's a waterfall there also. We'll figure out if we're able to go there. I am completely geared up because I'm assuming कि वहाँ पे बहुत snow होगा and it's going to be super cold क्योंकि usually जो कज़ाकिस्तान के लेक्स है वो लेक्स तक पहुँचने के लिए आपको थोड़ा हाइक करना पड़ता है to get to the lake and it's completely a snow clad area. So I'm assuming that उस हिसाब से I have layered up myself in like 6-7 layers, but which means I am totally prepared. मैं अभी नीचे उतरी हूँ and it seems like it has rained last night in Almaty because everything here is wet. The roads are wet, the cars are wet. पहले मुझे खिड़की में से जब मैं देखी थी मुझे लगा कि ओस है, but it's raining. So well, गाड़ी आ चुकी है. Onwards to the first place today. तो वहाँ से अलमाटी का जो घर था वहाँ से निकल के वी टुक अ Yandex गो कैब एंड वी कम टू दिस बस स्टेशन. इस बस स्टेशन से हमें बस मिलेगी टू गो टू द इसिक सिटी जहाँ पे वो लेक है. सो अलमाटी से इसिक सिटी इज अबाउट 1.5 आवर का जर्नी. आई विल कंफर्म इट वंस वी हैव रीच्ड कि कितना टाइम लगा बस से. बट दीज आर द लोकल बसेस, सो यू जस्ट नीड टू पे देम इन कैश व्हेन यू गेट इनटू द बस एंड दे ड्रॉप यू एट इसिक सिटी. और फिर इसिक सिटी पहुंचने के बाद वहाँ पे बाहर जो कैब्स खड़े होते हैं, जो कार्स खड़े होते हैं, यू कैन रेंट दैट टू गो टू द लेक. पे सब बसेस आ रही है. वी आर वेटिंग फॉर बस नंबर 225. यहाँ नंबर्स लिखे. सो दिस इज 233. ये 207 है. हमें 225 बस नंबर चाहिए. तो बेसिकली ये बस हमें मिली है. ये जो सारे ही बसेस खड़े हैं यहाँ पे छोटे वाले, ये लेके जा रहे हैं इसिक. तो हम इसिक सिटी इसमें जा रहे हैं एंड दिस कॉस्ट 500 टेंगी पर पर्सन. Okay, so I got something which is called as samsa. It's like our samosa. It's called as samsa over here, and this one is a chicken version of it. So I'm just going to grab something to eat quickly before we get into the bus. Okay, so we've reached Issyk city और ये बहुत ही अलग है from what Almaty was. Almaty was a very developed city, but मतलब यहाँ पे भी development है, but look at like the views. The entire city has like a backdrop of these snow-capped mountains. और यहाँ पे हर जगह पे snow है. आपको snow ही snow दिखेगा हर जगह पे. बहुत ही सुंदर जगह है. मैं बस स्टॉप पे उतरी हूँ. यहाँ से मुझे जाके अब टैक्सी लेनी है towards the lake. But I'm just taking in some time to kind of take in the city because ये इतना सुंदर है.
सो यू कैन डाउनलोड द इन ड्राइवर ऐप इसिक सिटी पहुंचने के बाद अपेरेंटली, और यहाँ पे आप लेक इसिक के लिए कैब बुक कर सकते हो, विच विल ऑब्वियसली कम विद द ड्राइवर. दिस इज़ व्हाट सम लोकल हियर सजेस्टेड, तो हम ट्राई करके देख रहे हैं. The beautiful Turgan Gorge in Issyk village is one of the few mountain gorges near Almaty. Evergreen trees, fast rivers, rocks and cliffs create a beautiful landscape. बिल्कुल वैसा जैसे हम बचपन में सीनरी का ड्राइंग बनाया करते थे. ओके तो लेक तो अनफॉर्चुनेटली क्लोज्ड था, इसिक लेक, बिकॉज यहाँ पे कल रात को एवलॉन्च हुआ था, बिकॉज ऑफ विच इट्स वेरी वेरी रिस्की टू गो टू द लेक. तो जो चेक पोस्ट था वहीं से हमें उन्होंने बोला कि लेक क्लोज्ड है, सो यू वोंट बी एबल टू गो अहेड. सो वी आर लुकिंग एट मोर थिंग्स टू डू इन इसिक, बिकॉज इसिक सिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है. इट्स कम्प्लीटली एनवेलप्ड विद दी स्नो क्लैड माउंटेन्स. यू नो पूरे शहर में बर्फ़ गिरी हुई है, जहाँ पे भी देखो द टेम्परेचर इज़ लोअर देन Almaty of course, but it's मतलब ब्यूटी वाइज इट इज़ 10 times देन वॉट अ सिटी वुड बी, बिकॉज ये थोड़ा आउटस्कर्ट्स में है, थोड़ा कंट्री साइड है, छोटा सा टाउन है. So from whatever we can gather from the locals, we are trying to figure out कि हम इसिक सिटी में और क्या कर सकते हैं. तो यहाँ पे एक तुर्गन वाटरफॉल करके है, we're trying to go there, जहाँ पे हमारे ड्राइवर ने हमें बोला कि 30 मिनट का कुछ हाइक है टू गेट टू द वाटरफॉल, एंड गाड़ी आपको एक पॉइंट तक छोड़ेगी. सो we're trying to even explore that अगर वो हो सके, एंड एनी अदर लोकल अट्रैक्शंस इन इसिक सिटी. सो स्टे ट्यून्ड, आगे तक बने रहना, क्योंकि इसिक सिटी में आप और क्या कर सकते हैं अदर दैन द लेक इसिक ऑब्वियसली, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि हमने क्या किया एंड हाउ एल्स आर वी स्पेंडिंग द डे हियर. Our driver also brought us to show the most famous golden man of Kazakhstan, a warrior dressed in traditional armor with battle equipments and 4,000 pure gold ornaments. ये excavation करने पे मिला था और माना जाता है कि the skeleton belongs to a young Saka prince or princess. And then the golden man became the national symbol of Kazakhstan. जगह इतनी खूबसूरत है गाइस. इफ़ यू आर कमिंग ड्यूरिंग विंटर तो इसिक सिटी ज़रूर आना. इवन इफ़ यू आर जस्ट टेकिंग अ ड्राइव अराउंड और स्ट्रोल अराउंड द इसिक सिटी, इट इज़ सो 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 ब्यूटीफुल. मैं तुर्गन वाटरफॉल की तरफ जा रही हूँ, बट ऑन द वे वी जस्ट स्टॉप बाय हियर बिकॉज दिस इज़ सो ब्यूटीफुल. हाउ गॉर्जियस इज दिस. Issyk is a little village, but more beautiful than you can imagine. The drives here can be so calming. You'll always be driving through literally wallpapers, especially in the winter. There are a few waterfalls in the forests of Issyk village. One of them is the Bear waterfall, the most accessible one. So यहाँ जो लिखा है कि 1 kilometer है, basically the hike up to the waterfall is 1 kilometer and 300 meters, and it takes about 30 to 40 minutes depending on your speed obviously. So that's that. Here are some do's and don'ts, mainly don'ts, that you shouldn't be doing while you go up and are at the fall. Do not litter the place, etc. You can't do bonfires and a few other things that you need to keep in mind. Just bear in mind कि ये गेट आपको आएगा, यहाँ से आपका हाइक स्टार्ट होगा and then you go all the way up. The route is pretty easy. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है क्योंकि पैरों के निशान बने हुए हैं. द रूट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ, इट्स नॉट मार्क्ड बट यूल अंडरस्टैंड व्हाइल यू आर देयर. सो हैप्पी हाइकिंग इफ़ यू कम हियर फॉर द वाटरफॉल हाइक.
तो ड्राइवर ने हमें छोड़ा है एक पॉइंट पे जहाँ से वी नीड टू स्टार्ट हाइकिंग अप टू द वाटरफॉल. 1 किलोमीटर लिखा था बोर्ड पे इज़ हाउ लॉन्ग द हाइक इज़ फॉर. ये जो आपको सुनाई दे रहा है बैकग्राउंड में इज़ अ रिवर विच इज़ फ्लोइंग राइट हियर एंड इट लुक्स सो सीनिक, सो ब्यूटिफुल. बिल्कुल इट लुक्स लाइक अ फिल्म सेट. आई एम स्टिल ट्राइंग टू प्रोसेस ऑल ऑफ दिस दैट दिस इज़ फॉर रियल बिकॉज I haven't honestly walked in this kind of snow-clad place. Of course, Kashmir may I have, but nothing really can beat how beautiful this place looks right now. So I'm super excited. 30 minutes. Okay, so I'm assuming we are pretty much halfway through. I don't know halfway through hai ya like we're more towards the waterfall or we're more still towards the start. I don't know. But at this point I started feeling extremely hot. Not exhausted honestly because the weather is really nice, but very hot. Maybe because I have insulated a lot, so you can see I've opened up all my layers. बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है मुझे. But we're savoring the view, taking little pit stops in between. And walking through trying to find this waterfall. Not sure if we're going to go till the source of the waterfall because the view here itself is so beautiful that we don't want to miss that in order to try and rush to get to the waterfall. So let's see. So instead of racing against time and reaching the waterfall, I decided to savor the little moments of joy along the way. The fresh snow, the little river flowing, the cute wooden bridges. It seemed like I was in a fairy tale. Okay, so we didn't go till the end of the waterfall, till the source of the waterfall. We hiked for about 30-ish minutes. But उसके बाद when we looked at the time, we realized कि अंधेरा होना start हो जाएगा. So basically यहाँ पे winter में Kazakhstan में 5:30 को sundown हो जाता है. And we wanted to like explore a couple more places on the way back, take pit stops, take pictures and stuff while there is still light. So we decided to take a U-turn back and come down. We've come down. It looks so beautiful all around over here. एंड अभी हम जिस रास्ते से आए थे वहीं पे इसिक सिटी के अंदर ही वापस जाएंगे. लेट्स सी इफ देयर इज एनीथिंग मोर इंटरेस्टिंग दैट आई कैन शो यू गाइस. और बस ऐसे कब यहाँ दिन निकल गया पता ही नहीं चला. एंड वी टुक अ बस फ्रॉम इसिक विलेज टू अलमाटी सिटी एंड हेडेड बैक. Back from Issyk into Almaty city and now we're going to grab some dinner and then go home. लेकिन आज हमें इंडियन खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है. We were desperately craving something Indian, so we found an Indian restaurant. And I'll tell you a little more about Indian restaurants out here in Almaty that I want to tell you about once we get there, when you get better audio. But for now, we are headed to the restaurant for dinner. You know, I'm that person who loves experimenting with food and trying the local delicacies no matter where I go. But on a long trip like this one, आज था day 5 और एक Indian meal खाने की तलब तो लगी थी. Okay, so here we are at Spice Mantra, finally. Almaty has about 9 Indian restaurants. You'll find a list I've made in the description for you. But Spice Mantra is where I am. And just look at their extensive menu. I enjoyed my paneer butter masala and garlic naan. And what food they made.
Good morning from a new fresh day. Today I'm driving myself to the most favorite place in Kazakhstan, a spa center set in the midst of the snowy mountains. About 40-ish minutes away from the main Almaty city is the Tau Spa or Tau Dastarkhaan. That's an experience I highly recommend. Here's why. Check this out. You'll walk into a large reception area selling towels, bathrobes and slippers that are all mandatory to enter. But if you get yours from home, you can avoid spending here for it. Next, you'll need to make your payment for entry and get this band to put on your hand. Then head to the locker room, change into swimwear and enter a world of rejuvenation. This place is straight out of anyone's imagination of a perfect spa center. Operating since 2002, this spa center has a number of outdoor pools, hot jacuzzi pools, indoor pools, bars and gazebos, and bathhouses like this Japanese bathhouse, and the Scandinavian bathhouse. The place is surrounded by snow and mountains, but the water in the pools is extremely heated to keep you feeling comfortable and super relaxed. तो ये कज़ाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस मैं कह सकती हूँ, इसीलिए क्योंकि मैं स्पेशली विंटर में आई तो विंटर में बाहर अक्सर ऑब्वियसली बहुत ठंड हो जाती है. मेरे पीछे भी आप जैसे देख सकते हो, देयर आर स्नो कैप्ड माउंटेन्स एवरीवेयर. और इस ठंड को अगर आपको एक्सपीरियंस भी करना है, बाहर भी रहना है आउटडोर्स, बट यू स्टिल वांट टू स्टे वार्म, देन दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस. आप इजीली ताउ स्पा में एक पूरा दिन निकाल सकते हो. जो कॉस्ट है वगैरह तो सारे मैंने मेंशन किए ही है, पर अदर देन दैट एक्सपीरियंस इज फिनोमिनल. आप जो एंट्री फी पे करोगे उसमें आपको अलग अलग टाइप के बाथ्स मिलेंगे. देयर इज स्कैंडिनेवियन बाथ, देयर इज जापानीज बाथ, देयर आर वेरियस डिफरेंट काइंड्स ऑफ बाथ्स. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस टू कम. पूरा दिन यहाँ निकाल सकते हैं. You can head here in the morning and stay on until late evening or afternoon. It's quite a place for the price you pay. So this is the alpine bath. Apparently it has medicinal properties and this one's really good for your skin, so I'm definitely going here. The experience, I swear, is just unmatched. This was my third bath that I just entered into. This was the alpine bath. Tried Scandinavian and Japanese so far. This is the third one and it's amazing. I spent a good lot of time just relaxing across the different bathhouses, each one having a different health benefit and helping your mind and body relax. Well, that was it from this episode, but stay tuned for the fourth and the last episode from Kazakhstan as we embark on something truly exciting and adventure-filled.